Hi everyone. Today on Market Makers, we have Siddharth Srivastava. He's the fund manager at Mirae Asset. Siddharth is an expert in passive investment products such as ETFs, that is exchange traded funds. Today we are going to talk about an interesting, topic or subject which is called as smart beta investing, and also on NFO of Mirae Assets, Nifty 200 Alpha 30 ETF fund of fund. तो ये सारी बातें करेंगे सिद्धार्थ के साथ. वेलकम सिद्धार्थ. Thank you, Milan, for having me on this webcast. Thanks for joining. So, Siddharth, let's start with very basic question related to this NFO. Could you Yeah, explain to our viewers what is the concept of smart beta investing? yeah. So Milan, I'll take some time to explain this concept and थोड़ा simple रखने की कोशिश करूंगा. So passive investing 1976 में स्टार्ट हुई थी जब इंडेक्स फंड पहला लॉन्च हुआ था एंड देन पहला ETF 1990 में लॉन्च हुआ था. देन अर्लियर इट वाज सिंपली अबाउट market cap based index tracking, right? S&P 500, Nasdaq 100, इंडिया में निफ्टी 50 आया, then mid cap 150 etc. Then उसके बाद people realized that there is more investor requirement and necessities. Like सबके लिए निफ्टी 50 suitable नहीं है. Some people want lower risk, some people want higher risk, right? And then people started thinking about the fact that कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिव फंड मैनेजर्स यूज कर रहे हैं एंड वो सालों से एक कैरेक्टरिस्टिक और एक बिहेवियर टारगेट करते रह रहे हैं, राइट? एंड ये फैक्टर्स क्या है? अगेन काफी इंट्यूटिव. वन ऑफ द फैक्टर इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जहां पे यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विच आर डूइंग वेल फ्रॉम अ stock return point of view. Then there is investing in quality companies, जहां पे आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होता है, जिनका लेवरेज लोअर होता है, जिनकी प्रॉफिट स्टेबिलिटी रहती है, अर्निंग स्टेबिलिटी रहती है. देन देयर इज इन्वेस्टिंग मेथड जहां पे आप हाई डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, लेस वॉलेटाइल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो. वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग सबको ही पता है, ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग सबको ही पता है. तो ये सारे फैक्टर्स है, राइट? एंड ये फैक्टर्स अलग अलग मार्केट साइकिल में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो सोच ये आई कि क्यों ना इन्हीं फैक्टर्स को टारगेट किया जाए पैसिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन अ रूल बेस्ड मैनर. नाउ देयर इज अ वे यू कैन आइडेंटिफाई कंपनीज विच आर डूइंग वेल इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग. आप उसको रूल में डालो एंड यू कैन क्रिएट एन इंडेक्स आउट ऑफ इट एंड लॉन्च एन ETF और एन इंडेक्स फंड. इसी तरीके से आप क्वालिटी कंपनीज को डिफाइन कर सकते हो, return on equity, return on asset, debt equity ratio, etc., earning stability, and identify X number of quality companies and create an index and then launch an ETF or an index fund. Similarly, value को आप define कर सकते हो, growth को define कर सकते हो. तो ऐसे इंडेक्स बनना शुरू हुए एंड पहला स्मार्ट बीटा या फिर फैक्टर बेस्ड फंड 2003 में लॉन्च हुआ, विच वॉज बेस्ड ऑन इक्वल वेट मेथोलॉजी, कि जितने भी स्टॉक्स होंगे सबको इक्वल एलोकेशन मिलेगा. हाँ, इसमें फायदा क्या होता है कि अभी आप अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अपने पसंद अनुसार फैक्टर चूज कर सकते हैं, राइट? जैसे मिलन, अगर आप रिस्क सीकर है, आपको लगता है कि इंडिया एक बुल मार्केट में रहेगा अगले 5 सालों तक, तो आप अल्फा और मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दोज आर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, टिपिकली बुल मार्केट में अच्छा करते हैं. नाउ देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स राइट नाउ जिनसे हम मिल रहे हैं हु आर रिस्क एवर्स, जिनको लार्ज कैप में भी फ्रॉड दिखाई दे रहा है. उनके लिए लो वॉलेटिलिटी बेस्ड फंड है which typically has lower risk and better return to risk profile. Some people are happy with dividends which are coming, they can invest in dividend based fund. Some people want to do value based investing, so they can invest in value based fund. इन फैक्टर्स की सिक्लिकलिटी होती है, अलग परफॉर्मेंस बिहेवियर होता है. सो लोग अपने, जैसे मैंने बोला, रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पर्टिकुलर फैक्टर चूज कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड इसी फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस की वजह से स्मार्ट बीटा फंड्स, या जैसे हम फैक्टर बेस्ड फंड्स भी बोलते हैं, ग्लोबली काफी पॉपुलर हुए हैं. राइट नाउ
global AUM is around $1.6 trillion because ये different investor की overall portfolio में फिट बैठ सकते हैं. किसी के में मोमेंटम फिट बैठेगा, किसी के में लो वॉल फिट बैठेगा, एंड दैट इज वाई ग्लोबली पॉपुलर हो रहा है. इंडिया में भी राइट नाउ द AUM इज more than 20,000 crores. We have funds across momentum, low vol, quality, value, equal weight, etc., and even multi-factor products also. So these are fascinating products. Good thing is कि एक्टिव साइड पे है नहीं, तो आप मुझसे ये डिबेट नहीं करोगे कि ये एक्टिव बेटर है कि पैसिव बेटर है. दीज आर यूनिक ऑप्शंस विच आर ओनली अवेलेबल ऑन दी पैसिव साइड, हैव गुड हिस्ट्री एंड आर फाइंडिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्टिंग. सो एसेंशियली देखा जाए तो ये एक इंडेक्स को फॉलो करेगा ये फंड which has about 30 stocks and these stocks are selected basis these factors. Basically now universe can be any particular index, right? आप एक फैक्टर प्रोडक्ट बना सकते हो Nifty 100 से, या फिर लार्ज एंड मिड कैप से, या फिर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप Nifty 500 से. 30 स्टॉक भी रख सकते हैं, 50 स्टॉक भी रख सकते हैं. सो इसीलिए आप देखेंगे कई सारे अलग अलग टाइप के फैक्टर इंडिसेस अवेलेबल हैं. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं Nifty 200 से, तो आप सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और आप Nifty 100 में के यूनिवर्स से 30 स्टॉक चूज कर रहे हैं, तो आप सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज जिनमें मोमेंटम है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Got it, got it. Now, in this context, the way you explained smart beta investing, could you tell us what is the inspiration and vision behind, launching Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF fund of fund? Yeah. So basically हम लोगों ने अभी तक 4 फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करके रखे हुए हैं. एंड आइडिया इज टू केटर टू different risk profile and investor objective. So we have low volatility based fund also for people who are risk averse. And then on the contrary side, we have this Alpha 30 based ETF also, जहाँ पे it invest in 30 companies out of Nifty 200 space. So it looks at 100 large cap companies and 100 mid cap companies, and जिन कंपनीज ने पिछले एक साल में अल्फा जनरेट किया है, मतलब मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, उनको सेलेक्ट करता है पोर्टफोलियो में. नाउ दिस इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी. दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू कैप्चर अ ट्रेंड, trying to capture a sector which is doing well or a stock which is doing well. And this typically works when a market is moving in a single direction in a long term point of view. Yes, there will be hiccups, but अगर आपको लगता है कि इंडिया एक बुल रन में है एंड अगले 5-7 साल में 15% के आसपास लेट्स से Nifty 50 का रिटर्न राउंड अबाउट आएगा, yes, there will be some corrections, but एक directional is in positive way, then वहाँ पे आपके ये momentum based fund and alpha based fund अच्छा करते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इसीलिए हम ये प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं फॉर पीपल हु आर ओके विद सम ऑफ द ड्रॉडाउन्स, some of the corrections which these products may have, which may be higher than the broad market index, but overall they are targeting higher return with higher risk. And when you say it is a fund of fund, what does that mean? ये term का मतलब क्या होता है, fund of fund? Yes, so ETF हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था Q4 में. Then ETF is something which you can buy on the stock exchange just like stock, but you need a demat account and a broking account. So we got a lot of investor sorts of request to launch a fund option also, so that people can buy it just like a normal mutual fund unit. SIP कर सके, STP कर सके directly with the AMC. So that is why we are launching this fund of fund also, which will simply invest in this Alpha 30 ETF itself. So now we'll be having an ETF route also to take exposure in this idea, and a fund route also which will take exposure in this portfolio via investing in ETFs. Okay, got it.
एंड थोड़ा अगर फंड के स्पेसिफिक्स पे जाए तो हाउ आर दीज कंपनीज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, एंड ये कौन से सेक्टर्स को टिपिकली रिप्रेजेंट करती है, या ऐसा कुछ है ही नहीं कि पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करे, इट कुड बी एनी सेक्टर विच इज इन मोमेंटम? हेलो। नहीं, आई थिंक मिलन आपने काफी थोड़ा सा आंसर अपने क्वेश्चन में ही दे दिया है। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अल्फा इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट identifying trends as quickly as possible and rather identifying, let's say, persisting trends. I think persisting is more important, right? So इसमें for example alpha based product जो हम लेकर के आ रहे हैं, मैंने मेंशन किया, it picks out कंपनीज फ्रॉम टॉप 200, निफ्टी 200 में से पिक करता है, 30 स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन लास्ट 1 year आउट परफॉर्मेंस. Now, one thing it does, which there's a momentum index also, वो नहीं करता है. अल्फा में क्या होता है कि नॉट ओनली सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन आउट परफॉर्मेंस, बट स्टॉक वेइंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आउट परफॉर्मेंस ओनली. बिकॉज आई थिंक लोगों को पता ही होगा कि स्टॉक सिलेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट एलोकेशन भी है, राइट? सो अल्फा में क्या होता है, इफ देयर इज अ लार्जर company, let's say ICICI Bank, and there's a smaller company, let's say PNB, and if PNB is doing better, it will have a higher allocation towards PNB. Whereas जो momentum based funds जो कि NSE ने launch किए हुए हैं, it allocates weight based on combination of free float market cap as well as their performance. So वहां पे हो सकता है कि ICICI का still higher weightage है, irrespective स्मॉलर बैंक्स ने अगर बेटर किया हुआ, जैसे कि पीएनबी इन माय एग्जांपल. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कि इन केस ऑफ अल्फा द फंड इज रिव्यूड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, एंड इन केस ऑफ मोमेंटम द फंड इज रिव्यूड ऑन अ 6 monthly बेसिस. आई फील दैट अगर आप मोमेंटम या अल्फा स्ट्रेटजी टारगेट कर रहे हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू the portfolio in a more frequent manner, and that is why I feel that quarterly is better than semi-annually. And from a portfolio point of view, there is high churn. On an average आप देखोगे तो around out of 30 stocks, every rebalancing 7 to 8 stocks move out. In fact, if I'm not wrong, in 2021 17 stocks moved out in a single day, and 17 new stocks was brought in a single day itself. So it's a strategy which sees high churn, because of which it sees high sector rotation also and market cap segment rotation also. By what do I mean by that? अगर आप अल्फा की प्रोफाइल देखेंगे तो जब 2018-2019 में जब when large caps were doing well, you will see almost 75-78% allocation towards large cap. बट अगर आप 2021 एंड 22 में देखेंगे, यू विल सी अराउंड 60% एलोकेशन टुवर्ड्स मिड कैप, बिकॉज 18-19 में लार्ज कैप अच्छा कर रहे थे, रिसेंटली मिड कैप अच्छा कर रहे थे. सिमिलरली फ्रॉम अ सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, 2018-19 IT एंड FMCG वर दी हाईएस्ट वेटेड सेक्टर जिसका सबसे ज्यादा एलोकेशन था. उसके बाद IT का नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ड्रॉप होकर के negligible हो गया. Then it went back up again post COVID when IT companies were doing well, and right now again it's almost less than 5% or so, and right now allocation is more towards capital goods, financial services, especially on the PSU side, and healthcare also. So sector also rotate. Whichever sector is doing well, whichever stock is doing well, whichever market cap segment is doing well, that will get represented, and this churn is pretty sorts of stark, which I think it should be. अगर आप momentum based investing में invest कर रहे हैं तो you want higher churn, you want companies to move in, move out, sectors to move in, move out. So right now, for example, there is higher capital goods allocation and financial services, but अगले 3-6 महीने में trend आता है कि consumption starts doing well and IT starts doing well. So there won't be any surprise that by December end, you'll see a higher allocation towards IT and consumption and much lower allocation towards capital goods and financial services, for example. So this story, works well when the market is in a long-term bull trend. But just take thought that what if
there is some kind of hiccup in the market and short term या medium term downtrend आता है, so is it that bearing that one initial quarter rebalancing will actually help to hold companies which are doing better than the market even in downtrend? I think Milan, again, a very good question, and the way you have framed it, it's actually very right framing because see, there is no doubt कि alpha strategy and momentum strategy are more volatile, right? Because आप एक ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, तो देयर इज नो डाउट. एंड अगर आप सिंगल डे ड्रॉडाउन्स देखोगे, फॉर एग्जाम्पल 4 जून का देखेंगे या फिर किसी और पर्टिकुलर डे का देखेंगे, यू विल सी इट हैज अ हायर ड्रॉडाउन, राइट? बट हमने क्या देखा है कि अगर वो ट्रेंड पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रीबैल में या उसके नेक्स्ट रीबैल में, इट स्टार्ट्स कोर्स करेक्टिंग ऑल्सो इन अ रीजनेबल मैनर. फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2006 से देखता हूँ, विच इज 18 कैलेंडर ईयर्स, निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न 3 बार दिए इन 3 calendar years. Out of those 3 calendar years, Alpha has actually outperformed Nifty in 2 calendar years, which is surprising, right? Midcap has given negative return in 4 calendar years. Midcap 150. It has outperformed midcap in 3 out of those 4 calendar years by giving less negative return or a positive return. It also has given negative calendar year returns, Alpha Index, for example, but it has given negative return in last 18 calendar years में around in 4 calendar years, which is equivalent to what midcap has given and just one more than what Nifty has given. So it's not as if कि alpha is something कि आज बहुत ही positive है and then equal number of instances में बहुत ज़्यादा negative return देगा. That is not the case. It's about catching the trend. If you are able to catch the trend, even in a downward trending market, and you are able to invest in stocks which are falling less or which are doing well even in those bad times, your alpha will do reasonably okay. जो कि हम ये कैलेंडर ईयर वाइज डेटा जैसा मैंने बताया, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, फाइंड दोज ऑब्जर्वेशंस. बट हैविंग सेड दैट, इट इज मोर वॉलेटाइल, एंड अगर आप सिंगल डे ड्रॉडाउन्स देखेंगे, इट विल हैव अ हायर ड्रॉडाउन देन निफ्टी 50. सो व्हाट वी सजेस्ट टिपिकली इज, आप अल्फा में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, या तो यू शुड बी अ वेरी गुड रीडर ऑफ द मार्केट, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले करना है आपको तो, राइट? कई लोग आते हैं जो सिर्फ 6 महीने 1 साल के व्यू से आते हैं, देन यू हैव टू रीड द मार्केट. यू आर एडिंग दैट रिस्क टू दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. बट अगर आप 4-5 साल के ऑब्जेक्टिव से आ रहे हो एटलीस्ट, एंड यू आर एबल टू कैप्चर 1 or 2 good years, then your returns over the period of your investment horizon is pretty reasonable, and that is what the data shows. So essentially, this could be for investors who like momentum, but in a systematic way. Absolutely. I think you have put it perfectly. Okay. And does this fund have a natural diversification in the sense, it has 30 stocks, but कभी-कभी ऐसा हो सकता है, let's say since, the fund is chasing momentum stocks, ऐसा हो सकता है कि, just for example, I'm saying, many of the IT stocks are doing good, तो ऐसा हो सकता है कि ये 30 में से 3-4 IT stocks ही concentration में आ जाए fund के अंदर? No, so basically at a stock level, there's a 5% stock cap. सो 30 स्टॉक जो होंगे उसमें 5% आपका स्टॉक कैप रहेगा. टिपिकली आपका स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन वहां तक लिमिट करके रखा हुआ है, बट सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन ऑल्सो. जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में देखेंगे, you'll have a different sector concentration tilted towards IT and FMCG. Right now it's tilted towards financial, towards capital goods, etc., as expected. So we have seen sectoral representation being a bit concentrated depending on which sector is doing well. So वो रहता है at a stock level, as I mentioned, कि 5% stock cap ensures some amount of diversification. And Siddharth, as you mentioned, it is a pretty diversified. The base of these 30 stocks could be from diverse sectors. So definitely, it has a certain level of advantages over traditional funds. But ये जो particular fund है, वो कौन से type के investor के लिए ज़्यादा suitable है?
आई थिंक हमारे पूरे डिस्कशन में काफी क्लियर हो गया, इट इज मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, who can take the drawdowns, who can stay invested during the bad times, and especially in current market valuations and levels, it is important कि आप उस ऑब्जेक्टिव से हो, राइट? आपको फ्रंट लोडिंग हो सकती है रिटर्न की, आपके रिटर्न शायद नेक्स्ट 6 महीने में ही बन जाए, लेकिन आपको 4-5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से आना पड़ेगा, एंड ये सोच के आना पड़ेगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में तब फायदा है जब वो एक दो ट्रेंड पकड़ करके वो आउट परफॉर्मेंस जनरेट कर दे। जैसे हमने ईटीएफ लॉन्च किया था जो अल्फा 30 ईटीएफ है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, लेकिन अक्टूबर में लॉन्च किया था, एंड सिंस देन इट हैज गिवन अराउंड 67-70% रिटर्न। सो 7-8 महीने 9 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है, बट रिटर्न्स आर फ्रंट लोडेड, राइट? वो साइकिल अभी आपको आगे देखने को मिले ना मिले, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो आप मोमेंटम स्ट्रेटजी, अल्फा स्ट्रेटजी में इस टाइम पे आ रहे हैं, आई एक्सपेक्ट इट टू डू वेल फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई बिलीव दैट इंडिया अगले 5-7 साल में, जैसे मैंने बोला, निफ्टी 13 से 15% का रिटर्न देगा, इज दैट वी बिलीव देयर विल बी करेक्शंस, नो डाउट अबाउट इट, देयर विल बी बैड टाइम्स। आप बट अगर आपने वो एक दो अच्छे कैलेंडर ईयर्स, अच्छे बुल फेजेस कैप्चर कर लिए, व्हेन मार्केट इज डूइंग वेल एंड मोमेंटम कैप्चर्स दैट ट्रेंड एंड डज मोर वेल, देन आप वेल्थ रीजनेबल क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेटजी के थ्रू। बट हाँ, यू हैव टू बी रेडी टू सी drawdowns. This is more of a sorts of a product जिसको आपको in combination with other strategies use करना पड़ेगा. It is not standalone allocation which you should do. So yeah, it is for people who have high risk appetite. Excellent. Thank you, Siddharth. Thank you for sharing these insights, and it's always a pleasure speaking with you. Thank you, Milan, for having me on this show. All the best for the NFO. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.